सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. Welcome back all students. In previous video lecture we have discussed differentiation topic exercise 1.1 and remaining part derivative of composite function theorem. Statement: if y equal to f of u is a differentiable function of u and u equal to gx is a differentiable function of x such that composite function y equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx equal to dy upon du into du upon dx. Composite function means consist of two function, dy upon du first function, second function du upon dx. Show that dy upon dx equal to dy upon du into du upon dx. Proof: given y equal to f of u means y is a function of u and u equal to g of x means x is a function of u and u is a differentiable with respect to x. First step: let there be a small increment in the value of x, say delta x. Total small increment denoted by delta x means this delta x be a small increment in x. Similarly, delta u and delta y be the corresponding increment delta u in u and delta y in y. First step. Second, as delta x, delta u, delta y are the small increment in x, u, y means in shortly delta x be a small increment in x, delta y be small increment in u and delta y be the small increment in y such that delta x is not equal to 0, delta u is not equal to 0 and delta y is not equal to 0. We have to consider delta y upon delta x equal to delta y upon delta u into delta u upon delta x. This statement, taking the limit delta x tends to 0 both sides, दोनों साइड लिमिट लिखना है, delta x tends to 0. First step, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x same. Right side, delta x tends to 0 with respect to u, delta y upon delta u into limit delta x tends to 0, delta u upon delta x. As delta x tends to 0, we get delta u tends to 0, u is continuous function of x. That is, first left side same, right side same, but delta y upon delta u means delta u tends to 0, that is u is a continuous function of x means delta x change to delta u. Limit delta u tends to 0, delta y upon delta u into delta u upon delta x. Since means given statement y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. Using the since means given term, y is a differentiable function of u means delta y upon delta u and u is a differentiable function of x means delta u upon delta x. We have limit delta y upon delta x equal to dy upon du means y is a differentiable function of u, y is a differentiable function of u means on right side
limit exist and finite. Exist and finite means we get the value of dy upon du. Next, u is a differential function of x, means this term exist and finite, we get the value of du upon dx. On right side, first term dy upon du, second term du upon dx. From 1 and 2, 1 and 2 means equation 1 and equation 2, we get y is also differentiation function of u, means delta y upon delta x tends to 0. On left side is also exist and finite, we get the value of dy by dx, dy upon du into du upon dx. We get the complete theorem डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. ये टोटल थ्योरम के अंदर आपको 4 स्टेप ध्यान में रखना है. 4 स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप बैक, फर्स्ट स्टेप थ्योरम, फर्स्ट स्टेप टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के अंदर y, u and x function, total 3 function. First a let b small increment in x be delta x. Similarly, first step be the small increment in x, say delta x. Similarly, delta u and delta y be small increment in u and y. Your first step. Simple. Let delta x be a small increment in x, delta y and delta u be the small increment in y and u. First step. Second step, consider delta y upon delta x equal to delta y upon delta u into delta u upon delta x. As a second step, delta x tends to 0, limit delta x tends to 0. Write the limit all number delta x tends to 0, limit delta u tends to 0 and limit delta x tends to 0. ये फर्स्ट स्टेप ध्यान में रहने दो. ये सेकंड स्टेप. इन शॉर्ट, अगेन थर्ड स्टेप, y is a differentiating with respect to x, y is a function of u and u is a function of x, as u is a continuous function of x, means delta u tends to delta x on left side. But since y is a differentiable function of x, y is a differentiable function of x and u is a differentiable function of x. Y is a differential function of u and u is a differential function of x, means on left side, on right side, both limit exist and finite, that is exist and finite. Exist and finite means on left side delta y upon delta x, y is a differential function of u but u is a continuous function of x, means this number exist and finite, we get dy by dx. Right side, delta y equal to delta y upon delta u, u is a differential function of y is a differential function of u, u is a continuous function of x, means this number is also exist and finite, we get dy upon du into u is a differential function of x, delta x tends to 0, exist and finite, we get du upon dx. We get the final answer, delta y upon delta x equal to dy upon du into du upon dx. टोटल थ्योरम के अंदर खाली
4 स्टेप ध्यान में रखना है. फर्स्ट स्टेप है delta x be a small increment in x, delta u be the small increment u, y and u. Second step, we have delta upon delta x equal to delta upon delta u upon delta x. Delta x tends to 0. Write the limit. All terms. Left side limit exists. Right side limit exists and finite. We get the answer dy by dx equal to dy upon du into du upon dx. ये रफ कैलकुलेशन है, आपको एग्जाम के अंदर ऐसा लिखना है. हाँ, इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेप, let there be a small increment in the value of x, say delta x, delta u, delta y be the corresponding increment u and y. We get the first step. Second step, we have delta y upon delta x equal to delta y upon delta u into delta u upon delta x. Second step, as delta x tends to 0, write the limit left side as well as right side. This number exists and finite. We get dy by dx. Delta y upon delta u tends to 0, but u is a function of x and this number exists and finite. We get dy upon du. U is a function of x, delta u upon delta x, limit delta x tends to 0 exists and finite. We get du upon dx. We get the total 3 or 4 marks. Next है geometrical meaning of derivative. Geometrical meaning of derivative means consider the x axis and y axis. Center point, origin. Taking the any curve, say suppose y equal to f of x, any curve on x and y axis. Consider the any point P in first quadrant. Any point P, a comma f of a comma f of a means along the x axis distance from point O to P equal to, say suppose a. Second, a h is a very small increment, is nearly equal to 0. That is h from a to a, the total distance from point Q, a plus h. Along the x axis, x coordinate a and a plus h. Along the y coordinate a, along the y coordinate equal to f of a, means x1 equal to a, y1 equal to f of a. The coordinates of point Q, the coordinates of point Q, a plus h, x coordinate, and the coordinates of point y2, f of a plus h. First point x, second point y. Next, we know that the slope of the given curve, general formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is same as y upon x. First point denoted by x1 y1, second point denoted by x2 y2. The slope equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope of PQ, segment PQ, slope of PQ equal to y2. y2 means f of a plus h minus y1. y1 means f of a upon x2. x2 equal to a plus h and y1 equal to a. A cancel, we get f of a plus h minus f of a upon h. Suppose we have h is smaller and smaller than a plus h which approaches to a as h gets closer to 0, means very small value of h, and that is h tends to 0. The slope of PQ equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. It is called as the f dash a, another name first principle, by the definition of derivative. It is the shortly geometrical meaning of derivative. If limit is exist, the slope of tangent at P equal to f dash a, means on right side limit exist and finite, we get f dash
a. We get the geometrical meaning of derivative. It is simple point. Next point, derivative of inverse function theorem. Derivative of inverse function theorem. Differentiation exercise 1.1. Second point, geometrical meaning of derivative, and third point, derivative of inverse function theorem. Suppose y equal to f of x. Y equal to f of x is a differentiable function of x interval I, and y is a 1 1 on 2. dy by dx is not equal to 0. Also f inverse y is a differentiable of f of I. Then dy by dx f inverse y equal to 1 upon f dash x, or dx upon dy equal to 1 upon dy by dx. We get the statement of inverse function theorem to show that dx upon dy equal to 1 upon dy by dx. टोटल थ्योरम के अंदर 4 स्टेप ध्यान में रखना है. फर्स्ट स्टेप, स्मॉल इंक्रीमेंट, कंसिडर टोटल स्टेटमेंट, write the limit, left side right side exist, and finite. We get the total answer. First step है एक गिवन है स्टेटमेंट के अंदर y equal to f of x, x equal to f inverse y are the differentiable function. Let there is a small increment of the value of x, say delta x, means delta x be the small increment in x. Corresponding there will be an increment in y, say suppose delta y, means delta y be the small increment in y. ये थ्योरम के अंदर खाली दो फंक्शन है, डेल्टा y एंड डेल्टा x ओनली. इन बिफोर थ्योरम composite function, 3 function, delta u, delta y and delta x. Delta x and delta y be the small increment, but delta x is not equal to 0 and delta y is not equal to 0. We get the first step. Write in short, let there is a small increment, total 2 line, delta x be the small increment in x and delta y be the small increment in y. Simple, 2 line. Next we have second step, we have delta x upon delta y into delta y upon delta x equal to 1 given in statement. ये पूरा स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, वेयर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा टेंस टू 0. राइट द लिमिट लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. लेफ्ट साइड लिमिट delta x upon delta y tends to 0 equal to limit delta x tends to 0 1 upon delta y upon delta x. दोनों साइड लिमिट लिखा है. delta x tends to 0, delta y tends to 0 because y is a differential function of x. Limit delta y tends to 0, delta x upon delta y equal to 1 upon delta x tends to 0, delta y upon delta x. ये हुआ आपका सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप के अंदर स्टेटमेंट के अंदर थर्ड स्टेप गिवन, सपोज y इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ x मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एग्जिस्ट एंड फाइनाइट. सिंस y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x मीन्स नेक्स्ट delta y upon delta x exist and finite, we get dy by dx. LHS and RHS both sides exist and finite, we get delta x upon delta y tends to 0 1 upon dy upon dx. Exist and finite. Third step, last step, LHS and RHS exist and finite means we get the answer dx upon dy equal to 1 upon dy upon dx, where delta y upon delta x is not equal to 0. The total theorem discussed in short. First step, inverse
function theorem. Claim: show that dx upon dy equal to 1 upon dy upon dx is called as inverse function theorem. First step, in short, let delta x be small increment in x and similarly delta y be small increment in y. We get the first step. Second step, we have means total delta x upon delta y statement 1 upon delta y upon delta x, as delta x tends to 0 and y is a differential function of x means delta y is also tends to 0. That is, limit delta y tends to 0, limit delta x tends to 0. First step and second step. Third step, since means given, since y is a differentiable function of x, y is a differentiable function of x means left side, right side exist and finite. LHS and RHS exist and finite. Exist and finite means delta x upon delta y tends to 0 but y is a differential function of x means delta x tends to 0. Total answer equal to exist and finite dx upon dy. On right side is also exist and finite. We get 1 upon dy upon dx. We get the final answer. ये शॉर्टकट है, रफ कैलकुलेशन है. एग्जाम के अंदर ये लिखना नहीं, एग्जाम के अंदर वो लिखना है. ये खाली आपको ध्यान में रहने के लिए, याद करने के लिए. ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है. हाँ, और 4 मार्क्स रहता है थ्योरम का. नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड इनवर्स trigonometric function means formula. Derivative of standard inverse trigonometric function. Total trigonometric function, inverse function 12 number. First है sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x and cot inverse x. In this table, not write the sequentially number. साइन इनवर्स एक्स के बाद कॉस इनवर्स एक्स आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है. क्यों? साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स ये टोटल पॉजिटिव नंबर है. एंड जो सी से स्टार्ट होता है, सी मीन्स कॉस इनवर्स एक्स, सी मीन्स कोसेक इनवर्स एक्स, सी मीन्स कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों नंबर अलग लिखा है, तीनों का साइन माइनस है. आपको ध्यान रहने मीन्स ट्रिक है, ध्यान में रहने दो. ये तीनों पॉजिटिव नंबर है और जो सी से स्टार्ट होता है, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों माइनस आता है. ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. First function, inverse function y equal to sin inverse x. First day y equal to sin inverse x. Condition is given mod x less than 1. Calculate the differentiation of dy by dx. First day x equal to sin y.
इनवर्स दोनों साइड x इक्वल टू साइन y. डिफरेंशिएटिंग with respective to y, not x. Differentiating with respect to y. x का डेरिवेटिव dx upon dy, not 1. Differentiating with respect to y means dx upon dy equal to sin y derivative cos y only. But we know that sin square y plus cos square y equal to 1. Using this formula, calculate cos y. Cos square y equal to 1 minus sin square y equal to 1 minus sin y equal to x, means we get x square. Cos y equal to, taking the square root of both sides, root of 1 minus x square, means write the value of cos y dx upon dy equal to root of 1 minus x square. By using the inverse theorem, dy upon dx equal to 1 upon dx upon dy equal to 1 upon dx upon dy का value root of 1 minus x square, means that is the derivative of y equal to sin inverse x equal to 1 upon root 1 minus x square. First number, d dx of sin inverse x equal to 1 upon root 1 minus x square mod x is less than 1. Mod x is less than 1 means the value of x is less than 1. ये जो वैल्यू x का 1 से 1 ज़्यादा रहेगा, ठीक है. रूट 1 माइनस. सेकंड नंबर, tan inverse same. Say suppose y equal to tan inverse x, means x equal to tan y. Calculate dy by dx. Differentiating with respect to y. Differentiation with respect to y means x equal to dx upon dy, not derivative of x equal to 1, because the differentiating with respect to y, dx upon dy equal to tan y sec square y. Calculate the value of sec square y, but we know that 1 plus tan square y equal to sec square y equal to 1 plus tan y equal to x, means x square equal to sec square y. That is dx upon dy equal to sec square y का total value 1 plus x square. By using the theorem, inverse trigonometric theorem, dy upon dx equal to 1 upon dx upon dy equal to 1 upon dx upon dy means 1 plus x square. That is y equal to tan inverse x, the derivative of tan inverse x equal to 1 upon 1 plus x square. Similarly, all number sec inverse x, sec inverse x equal to 1 upon x root of x square minus 1, cos inverse, cosec inverse, cot inverse, minus sign, ठीक है. Formula number 1 and formula number 7 equivalent, only the value of x equal to f of x. On right side equal to differentiation f of x upon root of 1 minus x square. 1 minus x square means the value of x equal to f of x whole square. Second, tan inverse x equal to f dash x upon 1 plus f of x whole square, means 1 plus x square. Similarly, sec inverse f of x equal to f dash x upon f of x root f of x square minus 1. ये फॉर्मूला है सेम. नेक्स्ट है cos, मतलब c से स्टार्ट होता है तीनों का भी माइनस साइन है. cos इनवर्स f of x इक्वल टू माइनस
f dash x upon root 1 minus f of x whole square. Cosec inverse f of x equal to minus f dash x upon f of x root f of x square minus 1. And last है cot inverse f of x minus f dash x upon 1 plus f of x whole square. टोटल 12 नंबर फॉर्मूला ध्यान में रहने दो. पहले फर्स्ट 3 नंबर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स का पॉजिटिव साइन आता है. 4, 5, 6 नंबर एंड 10, 11, 12 नंबर सी से स्टार्ट होता है. सी से स्टार्ट होता है तो सबका तीनों का और ये तीनों का नेगेटिव साइन आएगा. बाकी तो ये फॉर्मूला तो सेम है. नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इस टोटल फॉर्मूला टोटल इक्वल टू 23 नंबर है. 23 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर इम्पॉर्टेंट. साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स. मतलब दोनों नंबर सेम रहेगा. ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम रहेगा तो सेम नंबर राइट साइड आएगा. हाँ, साइन, कॉस और टैन सेम. साइन का कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा. टैन इनवर्स ये दोनों नंबर सेम रहेगा तो सेम नंबर आएगा. ये दोनों सेम रहेगा तो सेम नंबर आता है. दोनों सेम इक्वल टू थीटा मीन्स कौन सा भी नंबर रहेगा तो भी चलेगा. x इक्वल टू एक्स, ये दोनों सेम है. से सपोज फर्स्ट नंबर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नॉट दोनों नंबर सेम. साइन इनवर्स अंदर कॉस थीटा है. खाली कॉस थीटा आपको चेंज करना है. कॉस थीटा मीन्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. ये फर्स्ट है. फॉर्मूला नंबर 7. y साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा. फर्स्ट है चेंज कॉस थीटा इनटू साइन थीटा मीन्स इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा. दैट इज सिंस साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल टू मीन्स साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा, cos pi by 2 0. We get the total answer cos theta means cos theta equal to sin pi upon 2 minus theta. Write the value of cos theta equal to sin pi by 2 minus theta equal to ये दोनों नंबर सेम. We get the final answer pi by 2 pi upon 2 minus theta equals to this is same as equal to sin inverse sin equal to say suppose theta but theta equal to pi upon 2 minus theta pi by 2 minus theta. Similarly tan inverse cot theta change tan pi by 2 minus theta, tan inverse tan same theta equal to pi by 2 minus theta. Sec inverse cosec theta change sec pi by 2 minus theta, sec inverse sec theta same, we get the value of theta pi by 2 minus theta. Cosec inverse sec theta change cosec pi by 2 minus theta, दोनों same, we get the value of theta. Similarly cos inverse sin theta change to cos theta, cos pi by 2 minus theta equal to pi by 2 minus theta. Similarly cot inverse tan theta change tan theta to cot theta,
cot pi by 2 minus theta means tan theta. दोनों same, we get the value of theta. And last है sin inverse x equal to cosec inverse 1 upon x. मतलब sin inverse x equal to cosec inverse 1 upon x दोनों equal रहेगा, ये रेसिप्रोकल है. Similarly cosec inverse x equal to sin inverse 1 upon x. cos inverse x equal to sec inverse 1 upon x, दोनों रेसिप्रोकल. sec inverse x equal to cos inverse 1 upon x. tan inverse x equal to cot inverse 1 upon x. Similarly cot inverse x equal to tan inverse 1 upon x. That is tan inverse. Last है 19 number, 20 number, 21 number, 22 number and 23 number. Very important formula in next exercise. That is first a, for example, for example 19 number, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Show that 19 number LHS equal to RHS. Sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Show that LHS equal to RHS. Differentiating left side, sin inverse x plus cos inverse x equal to d dx of pi by 2. Differentiation of sin inverse x. Sin inverse x equal to back. Sin inverse x equal to derivative 1 upon root 1 minus x square. Differentiation 1 upon root 1 minus x square plus cos inverse x. Cos inverse x equal to minus 1 upon root 1 minus x square. And constant term pi by 2 constant term, d dx of constant term c derivative equal to 0 means pi by 2 equal to 0. Again plus minus 0 equal to 0 means that is sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. Similarly tan inverse x plus cot inverse x equal to same pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. And last day 22, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. And tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Last number है ना 5 मिनट. Formula number 23 show that LHS equal to RHS, that is tan inverse x. Show that tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. First LHS equal to tan inverse x plus tan inverse y. Let tan inverse x equal to say suppose alpha, any number, alpha, beta, gamma, any number. Tan inverse x equal to alpha and tan inverse y equal to beta. That is tan inverse means x equal to tan alpha. लेफ्ट साइड इनवर्स कैंसिल होगा तो x इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा, ये मल्टीप्लाई होता है. सिमिलरली y इक्वल टू tan बीटा. राइट साइड we know that tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. ये फॉर्मूला 11th में होगा.
tan alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta equals to alpha plus beta इक्वल टू ए tan राइट साइड ट्रांसफर होगा तो tan इनवर्स आएगा इनटू ब्रैकेट tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा. Write the value of alpha and beta. Alpha equal to tan inverse x plus beta equal to tan inverse y equal to tan inverse bracket again tan alpha equal to x plus tan beta equal to y upon 1 minus tan alpha equal to x tan beta equal to y. That is, we get the final answer tan inverse x 22 number tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. और 23 नंबर के अंदर खाली माइनस साइन आएगा, इधर माइनस होगा माइनस होगा ए माइनस प्लस माइनस और प्लस, बाकी ए माइनस रहेगा, बाकी नंबर सेम आएगा. द टोटल फॉर्मूला इनवर्स trigonometric function 23 number. Discuss the next. हाँ, टोटल जितना फॉर्मूला हुआ है अभी तक उसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर लेंगे. ओके.